Dear students, in this lecture, since we are doing a series of lectures regarding leaf morphology, in this lecture I'll discuss some important points regarding leaf morphology. First, we will discuss the leaf base. Remember, dear students, जहां तक leaf base का सवाल है, leaf base हमने already कहा है कि जहां एक leaf अटैच होता है स्टम के साथ, this is called as leaf base. And remember, in some plants, for example, in case of leguminous plants, you'll find a swollen leaf base. This swollen leaf base, it is called as pulvinous, and it is present in case of leguminous plants. So simple सी बात याद रखनी है, leaf base जिसको हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं, कि अगर leaf base swollen है, तो this swollen leaf base, it is called as pulvinous, and it occurs in leguminous plants. There's another type of leaf base called as sheathing leaf base. Sheathing leaf base क्या है? अगर आप मोनोकॉट्स या एस्पेशली ग्रासेस की बात करते हो, ग्रासेस में अगर आप देखोगे, एक लीफ बेस जो है ये एंटायरली कवर करता है स्टम को. दैट मींस दिस लीफ बेस फॉर्म्स ए कवरिंग अराउंड द स्टम. नाउ दिस टाइप ऑफ लीफ बेस इन व्हिच it surrounds the stump, it is called as sheathing leaf base. These are the 2 points regarding leaf base. One, it is called swollen, and another one is called sheathing leaf base. तो बेटा सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे पीटियोल के रिलेटेड. सिंस लास्ट लेक्चर में बता दिया, पीटियोल जो है स्टॉक ऑफ ए लीफ. फॉर एग्जांपल, दिस इज ए लीफ. नाउ दिस स्टॉक ऑफ ए लीफ, इट इज कॉल्ड पीटियोल. पीटियोल के रिलेटेड जो बातें हैं तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे लिखिए बेटा. पीटियोल, समटाइम्स द पीटियोल इज विंगड. अगर आप बोलोगे बेटा पीट, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ नॉर्मल पीटियोल. नाउ समटाइम्स दिस पीटियोल गेट्स मॉडिफाइड and it appears a winged shape. Now this winged petiole is present in case of citrus. Now in some cases like Ecornia, which is actually an aquatic plant, it is swollen. Now when the petiole is swollen, now this swollen petiole, it is present in case of Ecornia. But here comes the important point. बेटा इस बात की तरफ आप ध्यान देना कि यहाँ tendril बनता है. Now there are some cases, I hope in the stem morphology, you might be knowing what actually tendril is. Tendril मैंने कहा है ऑलरेडी आपको, tendril एक ऐसा coiled structure है which is sensitive to touch, जो एक प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. लेकिन वहां हमने पढ़ा था stem tendril. यहाँ क्या है बेटा, यहाँ petiole gets modified into tendril, not lamina, not leaf base. That means it is this part, petiole, which is actually the stalk of leaf, which gets modified into tendril, and it is present in case of clemats. So simple सी बात है बेटा, अगर नीट में क्वेश्चन आया, बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है कि आप मुझे बता बेटा, petiolar tendril is present in which of the following plant? So simply it is the clemats, and in clemats petiole gets modified into tendril. Now the next important point regarding the lamina. As I said in the previous lecture, that lamina is actually the main portion of the plant which is photosynthetic. So on the basis of lamina, leaf is of 2 types. एक टाइप है that is called dorsiventral, और दूसरा जो टाइप है it is called isobilateral. Now what is dorsiventral? कोई ऐसा लीफ, बेटा आप 2 तरीके के लीफ देख सकते हो. एक ऐसा लीफ जिसमें आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड को डिफरेंशिएट कर सकते हो. अगर आपको एक लीफ दिया जाएगा और उसमें आप एक साइड को डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे साइड से, दिस टाइप ऑफ लीफ इट इज कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल लीफ. लेकिन कोई लीफ आपको अगर ऐसा पाओगे बेटा, अगर कोई लीफ आप ऐसा देखोगे जिसमें यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, दैट मींस आपको डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है डॉर्सल साइड फ्रॉम द वेंट्रल साइड, दैट इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल लीफ. So dorsiventral leaf is present in case of dicots. Isobilateral leaf is present in case of monocots. So morphologically speaking, या morphologically more specifically अगर मैं बताऊं कि लीफ के हिसाब से आप बोल सकते हो कि कौन सा प्लांट डाइकॉट है और कौन सा प्लांट मोनोकॉट है. अगर आपके पास एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, आप बोलोगे सर ये प्लांट डाइकॉट है. अगर आइसोबाइलेटरल लीफ है तो आप बोलोगे सर ये वाला प्लांट मोनोकॉट है. जब आप डॉर्सिवेंट्रल लीफ की बात करते हो, सो 2 सरफेसेस है.
इट इज सिंपली द केस ऑफ हैंड. आप अपने हाथ को देखो, ये साइड इस साइड से इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है. सो इन द सेम वे एक लीफ में डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड से इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा. नाउ दिस डॉर्सल साइड इज आल्सो कॉल्ड अपर साइड. डॉर्सल मींस अपर साइड. It is called as abaxial side, and the ventral side, which is lower side, it is called as adaxial side. So let's move ahead. अब बात करते हैं बेटा स्टिप्यूल की. नाउ स्टिप्यूल मैंने कहा है टू lateral leaf like appendage which are present at the base of leaf. नाउ टू small lateral appendage, लास्ट लेक्चर में बता दिया. Now अगर स्टिप्यूल है we called it stipulate, for example in case of family Fabaceae. अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है it is called extupulate, for example in case of family Liliaceae. लेकिन बात अगर स्टिप्यूल की करते हैं बेटा, स्टिप्यूल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी है, सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओवर देम. अगर कोई आपसे बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल, एज यू ऑलरेडी नो दैट स्टिप्यूल जो है बेटा they are present at the base of leaf, लेकिन at the same time in the axil there is an axillary bud, so it gives protection to the axillary bud. Remember always that stipules give protection to the axillary bud. लेकिन स्टिप्यूल के बाद रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नाउ हियर आई हैव रिटन स्टिप्यूलर टेंड्रिल. तो अब आपको टेंड्रिल तो पता है, ऊपर हमने कहा क्लेमेट्स में होता है petiolar tendril, that means in clemats petiole gets modified into tendril. लेकिन what about here stipular tendril? For example एक plant है बेटा smilex. In this smilex, for example, this is a leaf, these are the stipules. These stipules get modified into tendril. So when stipule gets modified into tendril, this type of tendril, it is called as stipular tendril. So आप एक अलग से लिख सकते हैं, there are different types of tendrils. Like there one is stem tendril, one is petiolar tendril. Here we discussed the stipular tendril, and stipular tendril is present in case of smilex. There's another type of type of stipule that is called as foliaceous stipule. Now whenever you see foliaceous, by foliaceous we mean leaf. अगर हम किसी भी जगह बेटा ये वाली टर्म यूज करेंगे by foliaceous we mean leaf. So what about the foliaceous stipule? Now you know that stipules are two lateral appendages, but sometimes these two lateral appendages, that means stipules, get modified into a leaf-like structure. This leaf-like structure, it is called as foliaceous stipule. Now one more important point regarding this stipule, that is called as ocrete stipule. जब बात करते हैं बेटा ocrete stipule की, it is present in case of an important plant that is called as Polygonum, which belongs to family Polygonaceae. अब आप बोलोगे ocrete stipule क्या है? Sometimes this stipule get forms a covering around the stump. Now usually जो है stipule जो है बेटा, these are the lateral appendages. Now when these stipules sometimes partially cover the stump, that type of stipule, it is called as ocrete stipule. That means it forms a tube-like structure around the stump. Last point regarding the stipule, I'll wind up this lecture. So last point regarding this stipule is that sometimes the stipule gets modified into thorn. And in the stem morphology, I have discussed the difference between thorn, spine, prickle, and all that. So sometimes it gets modified into the thorn also. So in this lecture, we discussed the modifications of leaf base, modifications of petiole, modification, lamina की कोई usually modification नहीं है, that will be discussed in the modification of leaf. And then we discussed stipular tendril, or I should say modification of stipules. Thank you. I hope you enjoyed the lecture.